Yogah Karmasu Kaushalam. Myself, Yogesh and Vasya, Assistant Professor, Department of Economics, Veer Narmad, South Gujarat University, Surat. UGC Human Resource Development Center of Gujarat University is going to organize one refresher course, online refresher course in social science. And HRDC Gujarat University give me an opportunity to contact with you and deliver my session on a critical evaluation, human development index, methodological issue, and forecasting for India. So first I would like to thank Professor Dr. Jagdish Joshi sir, Professor and Director of UGC HRDC of Gujarat University. My special thanks to Dr. Sangeeta Madam and dear friend Rajendra Jani of Sociology Department for communicate with me regarding this event and topic. And my special thanks to HRDC team to provide all kind of support regarding my lecture. I would like to share, or I would like to say a few words on HRDC of Gujarat University. HRDC Gujarat University is ranked as a 15 in India and number 1 in Gujarat. It is a pioneer and created history or benchmark by organizing various refresher course, orientation program, faculty development program, and many more other programs. UGC HRD Gujarat University was funded by MHRD under RUSA grant. It is one of very few HRDCs which have very fruitful and necessary successfully organized the program under it. It has collaborated with IIMA, SPIPA, IIT Delhi, JNU, the Lal Bahadur National Academy of Administration, Mumbai University, Narsi Monjee Institute of Management, Inflibinet, SNDT, NIPA, NCERT, and UGC, and many more other institutes. HRDC Gujarat University, the first of its kind online annual refresher program in English language, teaching with ARPIT, with record break 9,000 participants in the year 2019 and 20. 3,500 participants in the year of 2021, and such kind of many program organized by HRDC Gujarat University. The website of UGC HRDC Gujarat University is very dynamic, and the journal of HRDC, it is indexed in cross-reference, it has DOI number, the journal, the quality of journal is fantastic. It is very innovative and established training institute in India. So I am really gratitude to give my lecture in this kind of well-known institute. Again, I am very much thankful to Dr. Jagdish Joshi sir. Today, I would like to speak, or today I would like to share my my ideas on the critical evaluation of Human Development Index. And also I would like to discuss the methodology issue, and I have some I done some exercise on forecasting for Human Development Index for Indian context. So that I would like to share with you. My lecture is in 5 parts. In first part, I would like to share with you the history of economic and human development and the concept of measurement of human development. That is in part 2. In third part, I would like to discuss with you Human Development Index and its in selected countries.
and in 4 parts, the trend of human development in India as per 2019 Human Development Report. And lastly, if we get some time, then we discuss the forecasting of Human Development Index in Indian context. So, in introduction part, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, जिसे हम मानव विकास बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स मानव विकास। सो ये जो डिबेट है, डिबेट बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, वो आज की या करंट सिचुएशन में उसकी डिबेट चल रही है, ऐसा नहीं है। इसके जो डिबेट है वो सालों से चल रही है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स से लेके न्यू क्लासिकल या केन्सियन ले लो, केन्सियन के बाद के जो इकोनॉमिस्ट है उसको ले लो, इन करंट जो इकोनॉमिस्ट है उसमें ये डिबेट ऑलरेडी चल ही रहा है। सो इन इकोनॉमिक्स we know the name of Adam Smith. Adam Smith is the father of economics. We can say the father of economics is Adam Smith. So एडम स्मिथ ने जो बात बोली, जो बात कही, एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा, जो कुछ भी लिखा, तो वो काफ़ी हद तक उसमें जो वेल्थ है, तो वेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। लेकिन मार्शल ने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मार्शल ने पीछे से बाद में कहा कि ये जो वेल्थ है तो वही अपना अंतिम उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेटली आवर टारगेट इज ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलबीइंग, इट इज आवर अल्टीमेटली टारगेट। जो बात गांधी जी ने भी कई सालों पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जो बोली थी कि जो अर्थशास्त्र मानवीय को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र नहीं बोल सकते, इसको अनर्थशास्त्र बोल सकते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी, वही आइडियोलॉजी के हिसाब से पूरा डेवलपमेंट की जो थियरी है, डेवलपमेंट के बारे में जो बात है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया। थोड़ा हम इकोनॉमिक हिस्ट्री या ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और फोकस करें तो हम डिकेड वाइज उसका डिस्कशन करेंगे। सो इन 50 सेंचुरी 50 का जो 50 का दायका था, इन 1950 सेंचुरी, तब तक विश्व के सारे इकोनॉमिस्ट थे वो ऐसा सोच रहे थे कि जिस देश में उसकी जीएनपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो वो देश में जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी, वो देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या इनइक्वालिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये जो 10 साल था, ये 10 साल में ये बहुत सारे देशों ने अपनी जीएनपी बढ़ाई, अपनी पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाया उन्होंने। लेकिन बाद में देखा तो जिस भी कंट्री ने अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ाया था, एनएनपी बढ़ाया था, तो वहाँ पे एक पॉवर्टी रिड्यूस हो गई हो या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो गया हो, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो गई हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स every economist और every philosopher और बहुत सारे देशों ने ये एक्सेप्ट किया कि पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम बढ़ने से जो कंट्री के बेसिक प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देन क्या हुआ, 60 का जो दशक आया, वो 60 के दशक में एक थियरी डेवलप हुई, उसे ट्रिकल डाउन थियरी बोलते हैं। ट्रिकल डाउन थियरी के हिसाब से सबको ऐसा लगा कि चलो ये ट्रिकल डाउन थियरी है तो उसकी जो स्प्रेड इफेक्ट है, इसको जो स्प्रेड इफेक्ट है उसकी वजह से
ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी का जो प्रॉब्लम्स है, इलिटरेसी का जो प्रॉब्लम्स है, इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन 60 के दशक के अंत में भी सभी विश्व ने जब एनालिसिस किया अपने अपने देशों का, तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ट्रिकल डाउन का इफेक्ट जितना जल्दी स्प्रेड होना चाहिए उतना जल्दी बॉटम लेवल तक पहुंचा नहीं। और इन 17th सेंचुरी हम जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, तो इन पूरे विश्व में 70 मीन्स 70 का जो दशक था, उसमें क्या हुआ कि ये न्यू इकोनॉमिक थॉट ने जन्म लिया और सभी लोग सोचते रहे कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो उसके बेस पे ये पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम इनइक्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 17 के अंत भाग में भी देखा तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बाद में जो 18 सेंचुरी थी, तो 18 सेंचुरी में किसी भी देश ने इतनी अच्छी प्रगति नहीं की, मीन्स कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो उस दशक को हम लॉस्ट डिकेड्स के नाम से जानते हैं। काफ़ी जो पार्टिसिपेंट है, जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से, उनको ये पता है कि ये जो 18 सेंचुरी है उसे हम लॉस्ट डिकेड से नाम से जानते हैं। और उसके बाद इन 1991 हम 90 की बात करें, तो 90 में महबूबुल हक है और अमर्त्य सेन है। ये अमर्त्य सेन और महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, जो बात सुल्ज ने 1970 में की थी अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में। उसके प्रमुख पद से उन्होंने जो लेक्चर दिया था, तभी उन्होंने ह्यूमन कैपिटल वर्ड्स का यूज किया। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री द वर्ड ऑफ ह्यूमन कैपिटल यूज बाय T.W. सुल्स। उनका पूरा नाम थियोडोर W. सुल्स है। ओके, तो वो बात गांधी जी ने जो बिफोर इंडिपेंडेंस जो बात कही थी, वो बात मार्शल ने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन वेलफेयर की बात की थी, वो बात, वो सभी को लेके महबूबुल हक जो पाकिस्तान के हैं, जो अभी नहीं है, हयात नहीं है, और अमर्त्य सेन जो मूल भारतीय है, 1998 में उनको नोबेल प्राइज मिला। वी नो द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु गेट द नोबेल प्राइज इन 1998। तो दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की कि अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, अगर वो आपको मेजर करना है, तो सिर्फ इनकम के पैरामीटर से उसे मत मेजर कीजिए, आप नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर को भी इंक्लूड करिए। सो ऑन दैट बेस, आफ्टर 1991 the regularly UNDP published human development report, and as I told you कि ये जो महबूबुल हक है और अमर्त्य सेन है, दोनों ने मिलके ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किया। और ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने जो है पूरा जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, पूरी जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, वो अलग तरह से रिप्रेजेंट किया उनको। एंड एज अ रिजल्ट 1991 the UNDP has started regularly publishing human development report। एंड जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि जो इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग है, अमेरिका या बहुत सारी कंट्री है जो इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग है, पर जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से जब उनका डेवलपमेंट कितना है वो मेजर करते हैं, तब पता चलता है कि वो डेवलपमेंट में
काफी पीछे है। हम जितना सोच रहे हैं उतने पीछे है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जहाँ पे ये इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के जोड़ने वाली जो ये कड़ी है, द चेन है, जो चेन जिस कंट्री ने भी मजबूत बनाई है तो वो डेवलपमेंट में काफी काफी आगे है। नॉर्वे है, आइलैंड है, इवन चाइना, हांगकांग, जापान, कोरिया, ये सारी जो कंट्री है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमको ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ हमको हम एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो कुछ भी डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ काफ़ी अच्छी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। और ये महबूब, इस स्लाइड में मैंने महबूब अल हक, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड अमर्त्य सेन, दोनों ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बोला है, बेसिकली उन्होंने चॉइस जो है वो चॉइस एनहांसमेंट की बात की है, चॉइस को बढ़ाने की बात की है। उसमें भी काफ़ी कुछ वो डिबेट है। अभी हम वो डिबेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिबेट काफ़ी हद तक जब टू वे कम्युनिकेशन है तो वो अच्छा रहता है। अभी ये ऑनलाइन के माध्यम से मेरे जो विचार है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मेरी जो सोच है और मेरी जो मान्यता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए डिबेट शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये डिबेटेबल है। डेफिनेशन जो महबूबुल हक ने भी दी है, यूएनडीपी ने भी जो दी है, वो काफ़ी डिबेटेबल डेफिनेशन है। उसमें काफ़ी हम बातचीत कर सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, काफ़ी कुछ सुना भी होगा, या काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया होगा। लेकिन नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसके बारे में जो यूएनडीपी ने जो कहा है, both the goal and process of enlarging people's capability, freedom and choice result in long and healthy lives, access to knowledge and the power to use it, decent standard of living, active communicative participant and autonomy in personal decision making। ये सारी जो बात है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के आधार पे है, या ये सारी बातें ह्यूमन डेवलपमेंट में कवर की गई है। यूएनडीपी ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत ही छोटा वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 1-2 मिनट का है। Human development is a concept of development that has to do with the creation and improving of living conditions where people can develop their full potential, can have a long and healthy life, can have access to an appropriate education system, can develop their potential to the fullest and be productive in order to have the opportunity to live according to their needs and interests. Human development in this aspect is about expanding the choices people have to lead qualitative lives. It is exactly those people who should be in the center of development process. Thus, human development means the capability for a long and happy life, for a qualitative education, and participation in economy to lead a life with dignity. Furthermore, the development does not concentrate on the amount of money a person gets, but on how much is invested in people. For example, as we know, the money can be used for medicine purchase, but also for the purchase of narcotic substances. Money can be used for military equipment, but also for construction of schools. Human development fights inequalities and promotes a life with dignity for all people worldwide, regardless of their origin, gender, and skin color. Sustainable human development means the creation of the same opportunities for next generations who have the same rights as their parents for a dignified life. The ethnical, political, social, economic, gender inequalities are some of the barriers for sustainable human development. They are the source of conflicts, aggression, and other problems that disable a dignified life and have devastating long-term consequences. Sustainability is a crucial aspect considering the growth of population, which causes a higher consumption, which on the other hand damages living environments beyond its capacities. Based on data, with the growth of population in a world with 7 billion people this year, in 2050, the number will be approximately 9 billion,
We buy new cars only because they look more striking. We buy new computers, new phones. If we don't stop doing this, we won't be able to stop the garbage and waste and the use of resources that belong to at least 3 planets that in fact we have only one. Only a sustainable human development can balance this predictable phenomenon. Manufacturers will produce more. We will be encouraged to buy more. We will get more loans. And at the end, we will produce more waste that overpasses the existing resources. Only if we change our consumption behavior, we and our children will have a prosperous future. See, UNDP is very nicely preparing this small video. In this video, we definitely know that what is the concept covered by human development. अब हम थोड़ा उसके आगे जाएंगे कि UNDP published human development report from 1991 where human development report studied 177 countries. उसमें 170 कंट्री का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता है. उसकी हर एक छोटी छोटी बात जो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है वो आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी. इन 2019 रिपोर्ट ये जो 177 कंट्री है वो बढ़ के 189 हुई है, प्लस 6 ऐसी कंट्री है कि जिसका डेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड किया है लेकिन उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. एंड दिस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश द वेरियस इंडाइसेस that human development index, gender development index, gender empowerment measure, human poverty index, human consumption index, human rights index, technological achievement index, and multi-dimension poverty index, and many more. And many more they are publishing in various human development report. यहाँ पे अभी तक के जितने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुए, मैंने 2020 का रिपोर्ट जो है उसकी बात यहाँ पे नहीं की है. लास्ट 2019 का जो रिपोर्ट है उसी की बात मैंने लास्ट जो है मैंने डिटेल जो डेटा लिया है, वॉट एवर द डेटा इंक्लूडिंग इन माई लेक्चर, दैट इज कवर ओनली 2019 रिपोर्ट, दैट इज नॉट इंक्लूडिंग 2020 रिपोर्ट. And I think last 2 or 3 months before last 2-3 months, the 2020 report is already published by UNDP. So, but for that for that report you visit the UNDP website where you found this report. This website is open access website. You can easily search and easily you can get the report as well as the data as per your requirement. So वहाँ जाके हम इसको देख सकते हैं. हर एक जो रिपोर्ट है, every report there is some specialization, और हर एक रिपोर्ट में जो नई बात इनकॉर्पोरेट की है UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, तो उसको उन्होंने उसके टाइटल के हिसाब से हम देख सकते हैं. प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन कंजम्पशन इंडेक्स की बात जो की है, ह्यूमन राइट इंडेक्स की जो बात की है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की जो बात की है, तो वो सारे इंडेक्स 1991 से इंक्लूड नहीं हुए, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेके 1991 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ, तो बाद में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगी, काफी कुछ बदलाव है इसमें, काफी कुछ करेक्शन है. तो जब 90 में दूसरा रिपोर्ट पब्लिश हुआ, 92, 93, 94, 95, जैसे जैसे हर एक साल में कुछ नया जो इंक्लूड हुआ, ऐसा लगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेजरमेंट में ये प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम है,
या ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे सही में ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी कंट्री का कितना है वो नहीं पता चलता है। उससे बेटर है कि हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में जाए। तो 95 में जेंडर डेवलपमेंट की बात भी हुई, 97 में बाद में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात हुई, HPI 1 के बारे में बोला गया, HPI 2 के बारे में बोला गया डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के लिए। ओके, तो जैसे जैसे ईयर टू ईयर जो रिपोर्ट पब्लिश हुए, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए, मेथोडोलॉजिकल चेंज भी हुए, कंसेप्चुअल चेंज भी हुए, और अलग अलग थीम को लेके ये रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं। अभी तक के जितने भी पब्लिश हुए ये रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है आपको। एंड लास्टली यहाँ पे भी एक छोटा वीडियो है जो 2019 का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ तो वो क्या है, उसमें क्या इंक्लूड किया है, वो एक छोटा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हमको पता चले कि 2019 के रिपोर्ट में क्या है नया। Inequality is everywhere. It stifles ambition and potential. And when it becomes extreme, people can take to the streets. Ultimately, it damages economies and societies. The concept of human development is all about giving people freedom to decide who they want to be and how they'll live. It involves, among many other things, living a long, healthy life, receiving decent education, and having a decent standard of living. In 2019, Human Development Report studied inequalities in human development, revealing 5 important results. 1. Human development has progressed immensely. Far more people are reaching a minimum standard. There's less extreme poverty and hunger, and greater access to basic education. But progress still needs to be made. 2. Inequality is changing. 30 years ago, there was massive inequality in the most basic aspects of life. Many children didn't survive their first years or have any education. These gaps are closing rapidly, but new types of inequality are emerging fast, while richer populations have much greater access to university education and much better health at older ages. 3. Inequalities start before birth and can widen immensely by the time kids are in school. From then on, these inequalities can grow across lifetimes, driven by deep imbalances in political and economic power. This is evident, for example, in the relative positions of women and men in some countries. 4. We need new ways to measure new inequalities. Dollars and rupees won't always help us understand inequalities in health and education. We must go beyond averages to see the full picture. 5. We must act now to overcome inequalities and design policies that work for every age group. Giving kids early childhood education, for example, will last lifetimes. But governments shouldn't just tackle symptoms. Long-lasting solutions will come from addressing the root causes of inequality, often ingrained in a country's history and culture. That way, we can boost economic growth and reduce inequality at the same time. It's not too late to act. Okay, so in 2019 report, the UNDP focused inequality issue. हमने जो ये वीडियो देखा उसमें हमको ये पता चलता है कि दे आर फोकसिंग ऑन इनइक्वालिटी बियॉन्ड इनकम। जो इनइक्वालिटी की बात है 21st सेंचुरी में, तो उसी की बात जो है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट इंडेक्स भी मेजर किया है। आप जब 2019 का रिपोर्ट पढ़ेंगे या उसको देखेंगे या उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मेजर किया है। मैं टेक्निकल नोट की बात करूंगा बाद में पीछे से कि हाउ दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड। सो नाउ उसके बाद मैं जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है
तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है वो मेथोडोलॉजी में काफ़ी बदलाव आया है. Initially 1991 Human Development Index cover three major criteria. First is life expectancy. Second is first is health index. Second is education index, and third is the income index. These three parameters covered by Human Development Index. And UNDP give the brief note regarding this. If you go the UNDP website and if you search the technical note how the calculation this Human Development Index, then you can found 13 pages, 20 pages, or 19 pages like that for technical notes. And that technical notes give you the brief detail regarding this methodological part. So I would like to discuss that methodological part also. Today we are discussing for that. Okay, लेकिन जो मेजर बदलाव हुआ इन 2000 बिफोर 2010 और आफ्टर 2010 के रिपोर्ट की बारे में हम बात करेंगे कि 90 से 2010 तक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर हुआ, तो 90 से 2010 अप टू 2009 हम ले लें, तो अप टू 2009 उसमें उतना ज़्यादातर चेंज नहीं हुआ मैथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट में, लेकिन 2010 के बाद काफ़ी बदलाव आए उसमें. मेजर चेंज जिसको बोलते हैं, मेजर चेंज हम जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए. एंड 2010 के बाद अभी तक 2020 में भी हम देखें कि 2020 में भी जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ उसमें भी जो मेथोडोलॉजी है वो 2010 में जो अडॉप्ट की है वही मेथोडोलॉजी के हिसाब से अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मेजर करते हैं यूएनडीपी. और 2010 में जो 2010 के पहले की जो बात करें उसमें 3 डायमेंशन थे. मैंने बोला है कि फर्स्ट जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सेकंड जो है वो नॉलेज एंड एजुकेशन है, थर्ड जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनकम के साथ जो जुड़ा हुआ है. नॉलेज एंड एजुकेशन जो है वो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये जो तीनों डायमेंशन है वो तीनों डायमेंशन को लेके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होता है. एंड बिफोर 2010 रिपोर्ट, मैंने यहाँ पे मेरी स्लाइड में इंडिकेट किया है, दिस इज द ओल्ड मेथोडोलॉजी. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंबाइन 3 डायमेंशन, लास्ट यूज इन 2009 रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ as an index of population, health and longevity. इसलिए हेल्थ इंडेक्स में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2010 तक जो है वो ध्यान में रखते थे. फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन वी आर यूजिंग द लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. एंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी आर यूजिंग द पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर एज पर परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी. ये जो परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी है उसी के आधार पे सभी कंट्री की जो है पर कैपिटा इनकम US डॉलर में ली जाती थी, उसको लॉग में कन्वर्ट करते थे, लॉग में कन्वर्ट करके बाद में इनकम इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता था. अभी जो ये मेजरमेंट है, ये जो इक्वेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ये इक्वेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. अब ये स्लाइड में देख सकते हो कि हर एक डायमेंशन जो है, हेल्थ डायमेंशन है, एजुकेशन डायमेंशन जो है, इनकम डायमेंशन जो है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए सेम इक्वेशन आपको यूज करना है. डायमेंशन इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मिनिमम वैल्यू. अभी हेल्थ डायमेंशन को आपको मेजर करना है तो हेल्थ इंडेक्स इज इक्वल टू हेल्थ की जो एक्चुअल वैल्यू है. हेल्थ में हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअल जो है जो कंट्री की उसको लिया जाता है माइनस मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू जो यूएनडीपी ने डिसाइड की है,
अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यूएनडीपी ने डिसाइड की है ऑलरेडी, तो वही वैल्यू हमको यहाँ पे यूज करनी है। वो मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन हर एक जो डायमेंशन है उसका जो रिजल्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए हमको क्या करना है कि हर एक डायमेंशन को हमको निकाल के, हेल्थ इंडेक्स है तो हेल्थ इंडेक्स, प्लस एजुकेशन इंडेक्स है तो एजुकेशन इंडेक्स, प्लस इनकम इंडेक्स है तो इनकम इंडेक्स, तीनों को मिला के अपॉन 3 करके बाद में जो वैल्यू हमको मिलता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू हम कहते हैं। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। इट इज नॉट लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1। ओके, यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो यूएनडीपी ने डिसाइड किया है 1991 टू 2009 तक, वही यहाँ पे दी गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखो, मिनिमम वैल्यू 25 ईयर्स, मैक्सिमम वैल्यू जो है 85 ईयर्स, एडल्ट लिटरेसी रेट मिनिमम 0%, मैक्सिमम 100%, ग्रॉस एनरोलमेंट मिनिमम 0%, मैक्सिमम 100%, एंड जीडीपी पर कैपिटा $100 US as per purchasing power of theory parity, and maximum that is $40,000। ये यूएनडीपी ने दी है। और यहाँ पे दूसरा जो यूएनडीपी जो कैलकुलेशन करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू, और उसके बेस पे 0 से लेके 1 तक जो वैल्यू है उसमें यूएनडीपी ने अलग अलग वैल्यू को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया है। The human development index value is classified in various categories. Those countries get human development index value below 0.499, we can say that that is lower human development group or lower human development country. Those countries who get the human development index value between 0.500 to 0.799, it's called medium human development group or medium human development country. And those countries who get the human development index value is greater than 0.800, it's called higher human development country or higher human development group. So ये 3 कैटेगरी 2009 के पहले थी, और जो कैटेगरी जो ग्रुप में आ रही थी उसके बेस पे वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, वो कैटेगरी जो है वो कैटेगरी यूएनडीपी ने डिसाइड की थी। नाउ इन 2010 रिपोर्ट मैथोडोलॉजिकल चेंज बहुत बड़ी पैमाने में हुआ। इंडेक्स वही रहे, जो डायमेंशन थे वो वही रहे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स रहा, एजुकेशन इंडेक्स भी रहा और इनकम इंडेक्स भी रहा। लेकिन ये तीनों इंडेक्स में जो मेजर चेंज हुआ वो 2 इंडेक्स में हुआ। एक एजुकेशन इंडेक्स में हुआ, दूसरा जो है वो इनकम इंडेक्स में हुआ। जो एजुकेशन इंडेक्स में हुआ वो पहले क्या लिया जाता था, पहले जो हम लेते थे तो उसमें क्या था, लिटरेसी रेट था और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था। लेकिन अभी जो है, तो अभी 2010 के बाद, आफ्टर 2010 रिपोर्ट, इन एजुकेशन इंडेक्स यूएनडीपी कवर्ड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अभी यहाँ पे लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात नहीं है। अभी न्यू मेथोडोलॉजी में क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को कवर किया है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को कवर किया है। और ये मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है, दैट years that a 25-year-old person or older has spent in school, it's called mean year of schooling. And expected year of schooling means year has
a 5 years old child will spend in his education in his whole life. It's called expected year of schooling. उसके बेस पे हम जो है वो एजुकेशन इंडेक्स मेजर करते हैं. एंड इन इनकम इंडेक्स अभी तक अरिथमेटिक मीन का यूज किया जाता था. जीएनआई जो है पर कैपिटा इनकम, जो परचेसिंग पावर ऑफ पैरिटी थ्योरम के आधार पे हम लेते थे, उसमें अरिथमेटिक मीन का यूज किया जाता था. नाउ वी कैन यूज ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि कई जो स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने बोला कि देयर इज अ मेजर लिमिटेशन व्हेन यू यूज अरिथमेटिक मीन. सो इन न्यू मेथोडोलॉजी income index, for income index measuring we are using the geometric mean. So ये काफी मेथोडोलॉजिकल चेंज 2010 के रिपोर्ट में हुए, और ज्यादातर जो चेंज हुआ वो एजुकेशन इंडेक्स में हुआ और इनकम इंडेक्स में हुआ. और उसके बेस पे हम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो मेजर करते हैं. जो मेथोडोलॉजी है, मेजरमेंट की मेथोडोलॉजी है, दैट इज सेम. Old methodology or new methodology, the dimension or dimension is also same, only the indicator is changed. For health, life expectancy at birth, the same dimension and same indicator, but in education dimension the indicator is changed. Now we use the mean year of schooling, and now we use the expected year of schooling. And for standard of living, we use the gross national income per capita, but for that we use the geometric mean on the place of arithmetic mean. तो ये चेंज हुआ एजुकेशन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में. और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम के जो गोल है, your minimum or maximum value है, goal spot for human development index after 2010 report, जो यूएनडीपी ने डिसाइड किया है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई इंडिकेट इन माय दिस स्लाइड. फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वी कैन सी दैट द मैक्सिमम वैल्यू इज 83.2. as we found in 2010, this value is Japan. We found in Japan value in 2010, that is 83.2. Minimum is for 20. Mean year of schooling, we can see that mean year of schooling 13.2 in United States. Okay, minimum is 0. Expected year of schooling maximum 20.6 and minimum 0. Combined education index, and then per capita income, we seen that the maximum is 1,08,211 and minimum 163 US dollar as per purchasing power of parity theorem. Okay, so we can see the old methodology and for new methodology. This is also, we found a change in maximum value and minimum value. In dimension remains same, but the indicators is changed in education and income. And for this goal spot, the maximum value and minimum value is also changed. And then change is drastically changed. But nowadays, in 2010 or after 2010, this minimum and maximum value is changed on and what base? On what base? That is very important. That is very important. So that we have to analyze that all thing is available in this UNDP website. In UNDP website, when we go, then you found all this methodological change and all things is available. But this minimum and maximum value,
this minimum and maximum value, change on the base of the various countries' value. So that is very important. For that, you know, for that you have to very much aware how this value is decided. That is very important. So for that, सभी के माइंड में ये प्रश्न होगा कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड अदर इंडिकेटर्स फ्रॉम एवरी इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. सो जिसी भी कंट्री की जो मिनिमम वैल्यू मिलती है, generally the minimum value are set on the value that the society need to survive over time. And for both education indicators, the minimum is set as 0, since society can subsist without formal education. For income, it is set at $100 per capita GNI, which is lower than the lowest value attained by any country in recent history. In Zimbabwe, we can found the $100 in 2008. So that minimum value is 2000. The minimum value is $100. Okay. So इसी तरह से ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिसाइड होती है. सो हम देख सकते हैं कि बिफोर 2010 एंड आफ्टर 2010, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, how much the change we can found that. And according to 2010 Human Development Report, and after every Human Development Report, the Human Development Index classified in 4 categories. Before that, this classified in 3 categories. Now, this value is classified in 4 categories. So those countries who have the below 0.500 Human Development Index value, it is called lower Human Development country. Those countries, human development value is between 0.500 to 0.799. It's called medium human development country. And those countries found 0.800 to 0.899 human development value. It's called higher human development country. And those countries who found above 0.9 human development index value, those countries called very high human development country. So ये जो category है, this classification given after 2010 report. Okay, and after 2010 report, the dimension indicator, as we discussed, the dimension is same, but the indicator is changed. So for that, you measure every dimension: long and healthy life, knowledge. In knowledge, you can measure mean year of schooling, expected year of schooling, and for decent standard of living, you can use GNI per capita. So for that, you use the formula, same formula. We know the formula: actual index minus minimum value upon maximum value minus minimum value. There is a simple formula for every dimension. For every dimension, you incorporate, divided by 3, you can get the human development index value. This is a simple formula. When you have some data of your state-wise data, if you have available, if you have district-wise data available, taluka-wise data is available, then you can use this simple formula and apply it for your district or your talukas or your state. You can measure your human development index for your state or your district. So you can prepare a small research paper on it. After 95, the gender development index is measured, because काफी जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि we can use the overall life expectancy, overall education, overall standard of living. Then we did not found the exactly development situation.
So if you want to measure the perfect human development or perfect development situation, then you measure separately the female long and healthy life, female knowledge, female standard of living, and male long and healthy life, male knowledge, male standard of living. Then we plus it and then divide it by 2. Then we get the gender development index. It is very perfect than the human development index. So 95 से हम gender development index भी measure करते हैं UNDP में. Here I give one example how we measure a human development index. This is the old methodology. With old methodology, we can go through like this. I'll give the note. I'll send the note to HRDC. Let's send it to you. So I did not discuss much this. This is the example. This is just example. यहाँ पे मैंने टेक्निकल नोट्स दी है. देखो ये टेक्निकल नोट्स जो है वो टेक्निकल नोट्स पे हम जाएंगे. 16 पेज है. देखो इन 2019 रिपोर्ट the 16 page technical notes is available. This is the graphical presentation. UNDP calculate the human development index. How calculate the graphical presentation is available. The inequality adjustment human development index, the methodology is also available. Gender development index, how we measure gender development index, how we measure gender inequality index, that is also available in this technical notes. मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स. अभी देखो 2007 से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2. बट आफ्टर 2010 और फ्रॉम 2010 रिपोर्ट, दिस मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स is measured by UNDP. This is very particular than that old methodology. So that formula is also available in this technical notes. Okay, and here this is the formula which I already discussed with you. Dimension index, actual value minus minimum value upon maximum value minus minimum value. That all technical notes, the data sources, some examples, some reference, good reference, original reference, that is also available in this technical notes. So I suggest all of you that you go through this technical notes of 2019 report or 2020 report, which is latest available in the UNDP website. You can use that. It is very useful. Those who are working on human development index or the concept of sustainable development index, okay, that you all people use this technical notes. It is very, easy and very understandable. So this is technical note. Okay, and now I would like to focus the concept and measurement of human development. यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है आपको, विच क्रूगमैन जो है, क्रूगमैन करके एक इकोनॉमिस्ट है, दोज who are working on this methodological aspect of human development. EPW में उनका एक रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है, तो 90 से लेकर 2010 तक हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, इनकम इंडेक्स में जो मेथोडोलॉजिकल चेंज हुआ सभी इंडिकेटर्स में, सो व्हाट इज द चेंज, उसकी बात ये टेबल में उन्होंने दी है. सो दैट आई कवर्ड इन माय प्रेजेंटेशन. दिस इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय क्रूगमैन. सो वी कैन सी दैट in health indicators there is no change. There is no change throughout 1990, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 2010 and onwards. But in education, frequently the dimension or the indicator is changed. Dimension is not changed, but indicator is changed. And nowadays we can use the mean year of schooling
and the expected year of schooling. And in income, previously we can use the arithmetic mean, now we can use the geometric mean. So this is very particular, this is very particular formula which is used by UNDP. So I suggest you that those who are working on human development, the people also aware the methodological change of this human development index. And then later on, the sustainable human development concept is come out. That concept found by the professor Hulan Tok, the very odd name, but they are, with the help of UNDP, they have started the Human Sustainable Development Index. And वहाँ पे क्या ऐड हुआ, यहाँ पे कार्बन एम्बिशन पर कैपिटा जो है वो ऐड हुआ. और जब वो ऐड हुआ तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो कंट्री है, यहाँ पे मैंने दिया है ये इंडेक्स, ह्यूमन सस्टेनेबल इंडेक्स की बात बाद में उतनी ज्यादा नहीं चली, लेकिन तभी जो बात की इकोनॉमिस्ट ने, उसमें हमको ये देखने को मिला कि यूएस जो है वो -20 चला गया, कनाडा -15 चला गया, ऑस्ट्रेलिया -8 चला गया, रसिया -4. बहुत सारी कंट्री जो है, जब हम ये सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो उसका जो डेवलपमेंट है वो माइनस में चला जाता है. मीन्स एक्चुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है और बाद में ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू देखे तो वो काफी हद तक पीछे चला जाता है. सो इसके मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, इतना ही डिस्कशन में इसके बारे में यहाँ करूंगा. तो दैट दिस कंसेप्ट इज कवर माय इन फर्स्ट सेशन. Whatever the query you have, you can ask your coordinator, which is send it to me, and I try to solve all the query regarding this first session.